Right. So yeah. So we're starting. So today I'll be discussing about the design thinking, fundamentals of design thinking. So ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों को समझना. डिजाइन थिंकिंग आज के डेट में एक बजवर्ड है. Buzzword in the sense everybody talks about design thinking. So it's a combination of various kind of the concepts basically. So design thinking हम लोगों को देखें तो it's not only the design, it is not only that kind of the user interface, that is how it is defined. बहुत सारे लोग इसको मतलब प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड डिजाइनिंग समझते हैं, बट दैट इज नॉट द मैटर. हम लोगों को समझना होगा कि डिजाइन थिंकिंग कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए. बिकॉज हम लोग यदि देखें टुडेज मोस्ट इनोवेटिव or creative organization like Apple, Google, they are using it in a very big way because that is how they become the number one player in their respective field. आज के डेट में देखा जाए तो एप्पल का जो आईफोन आ रहा है और नया प्रोडक्ट एप्पल मार्केट में जो नया नया प्रोडक्ट लाता है, मान लीजिए जब पहले आईपॉड लाया था, फिर एप्पल का जो फोन आता है, इसमें हर टाइम कुछ ना. Sorry, Mukherjee sir, please Yes. allow us for the basic introduction word, then we Okay. can start the technical All discussion. right. Right. Yes. Thank you, sir. So, hello everyone. Welcome to our November Nexus Design Thinking workshop on Design Thinking Fundamentals for Startups. So, I hope all our startups doing well and staying safe. So, it is my absolute pleasure to welcome our special guest and mentor for today's online session. Honored to have with Mr. Tuhin Mukharjee, sir, Chief Designer, Pro Design Thinking, and Visiting Management Professor, TEDx speaker, and business coach consultant and co-author with Dr. Philip Kotla. So, and we have Mr. Ankit sir, project manager of Rise Hasi Incubation Center. So, if I am talking about Mr. Mukherjee sir, so his journey is nothing sort of inspiring from his groundbreaking work in promoting startup ecosystems to his efforts in empowering individuals through his platform. So, pro design thinking, he has truly made a remarkable impact on the countless lives. So, I would like to invite Mr. Ankit Rajat sir to give some input on this introductory design thinking session, and we will invite Mr. Mukherjee to take this session with our startup after that. So, Right. Ankit, over to you. Oh, okay. So once again, on behalf of Rise Jhansi Smart City and Rise Incubation Center, we really thanks to our today's mentor, Mr. Mukherjee ji, who accepted our invitation, and we will have the detailed discussion on design thinking. So dear startups, आप सभी अपने जो प्रोडक्ट और सर्विस डिजाइन करते हैं, एट द एंड उनको यूजर को यूज करना है, राइट? सो इन माय ओपिनियन, design thinking is all about the beginning and the approach which you need to utilize during the entire cycle of your product or service. आज हमारे स्पेशल मेंटर जो हैं आपको पूरा डिजाइन थिंकिंग के बारे में बताएंगे. इन माय ओपिनियन, डिजाइन थिंकिंग में हम जब अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, उसकी प्रोटोटाइपिंग टेस्ट करते हैं, उसको कस्टमर तक लेकर जाते हैं, और जब हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की पूरी लाइफ साइकिल एंड होती है, ये सारी चीज़ों का ध्यान हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ रखते हैं. दैट इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग. डिजाइन थिंकिंग में हम उसका अपीयरेंस कैसा होगा, उसका ह्यूमन एर्गोनॉमिक्स किस तरीके के होंगे, उसका टच एंड फील गुड कैसा आएगा, इन्वायरमेंट के कौन कौन से पैरामीटर्स उसमें फिट बैठेंगे, ये सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं. सो डिजाइन थिंकिंग इज इट्स अ methodology, it's a approach to have a complete concept of your product and service. Now I request मुखर्जी जी, जो डिजाइन थिंकिंग के स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे स्टार्टअप को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन थिंकिंग के ऊपर ये सेशन लेंगे. ओवर टू यू मुखर्जी जी. Thanks a lot, Ankit ji, and also Anil ji, for giving me such a nice introduction. So I was actually means talking about the design thinking. तो यहाँ पे अंकित जी और अनिल जी इसका मतलब जिस्ट जो है वो थोड़ा तो आप लोगों को डिफाइन किया है. सो डिजाइन थिंकिंग इज नॉट द वे दैट वी डिफाइन. आज के डेट में देखा जाए तो डिजाइन थिंकिंग हैज गॉट मेनी काइंड ऑफ द डायमेंशंस. इसका बहुत सारा डायमेंशंस है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. It is not only the design that
it should look good, feel good, or touch it good. But how we actually design the total process, so that is called the design thinking. So it is a very important, and I think मेरा personal opinion ये है कि it's a combination of management science, means management arts, and various kind of the philosophies. That is how it is combined, because I'm basically the management professional. So I work in a various management organizations also. So I saw that various kind of the management applications are there in design thinking, along with some technical parts, and there are also some philosophical parts. So it's a kind of the combination. And let me tell you one thing, it is human centered. यहाँ पे बोला जाता है डिजाइन थिंकिंग होता है ह्यूमन सेंटर्ड, मींस दैट टोटल मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक it's a kind of the human specific. It is not the any kind of the machine or any kind of the other means influence is there. It's a kind of the human centered. So that is why we say that human centered or human centered design thinking. It's a very important concept, because iska jo parts hai, when we'll discuss the part, we'll get to know why it is called the human centered. But जो मैं बोल रहा था, as I was talking about that, most creative and innovative organizations are using design thinking. आपको देखा जाए तो सी द एप्पल, इफ यू सी द एप्पल, एप्पल आज के डेट में इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. But in 2001, 2, or if you see the 15 years back, it was not that big that time. And it was not a very big, most valuable organization. But they rapidly changed their position. Google also is there. Means if it is the 20 years back, Google was not. Amazon was not. Today, all the today, if you see the world dominating organization has rapidly emerged in last 20 years. Because up 20 years ke pehle, if you see the 20 years back the world organization chart, you'd find that basically the machine oriented or the production oriented organizations were there, because those are dominated by those organizations like Exxon Mobil and different kind of the oil, petroleum, this kind of. Only one Disney was there. But apart from that, those are the this kind of the manufacturing organization. But today if you see that, that has totally changed, and it's a basically service organization. And how it happened, it happened, let me tell you one thing, another part, that why this mechanical means this kind of the manufacturing or the big organizations were dominating earlier. क्यों dominate कर रहा था? क्योंकि after industrialization जो यूरोप में हुआ था और द यूएस में जो हुआ था, उसका वहां पे उसके ऊपर फोकस था. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. सेम थिंग हैपेंड इन इंडिया. जब इंडिया में 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, तब हम लोग का यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जो मतलब था, मतलब इंडिया जो फोकस किया था हेवी मशीनरी के ऊपर. इसी के लिए आपको नवरत्न देखने को मिलता है इंडिया में. सी ये नवरत्न जो होता है, वीएच वेल, ये सब सब उसी टाइम में सेटअप हुआ था, बिकॉज द फोकस वाज इन हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन. और आज के डेट में देखिए, द सर्विस इकोनॉमी हैज कम. वी से दैट सर्विस इकोनॉमी, because the service companies are dominating. So same thing has happened in also world. Now design thing has played a very major role, because if you are actually introducing something new, if you are creating something new, you have to be creative, you have to be innovative. And that is how the design thinking comes into the picture. And there is another thing that generally we say, हम लोग अभी बोलते ही रहते, disruptive innovation. बहुत जगह पे इसको यूज किया जाता है, मगर इसका जो disruptive innovation क्या है? Disruptive innovation is something that we are creating something new that will disrupt the other industries. So इस ये disruptive innovation का concept जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके स्टार्टअप के लिए. बिकॉज इंडिया में आप देखिए बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, फिनटेक बेसिकली. ये जो फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन है, दे केम अप यूजिंग दिस टेक्निक, दैट इज डिसरप्टिव इनोवेशन. बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में देखिए, I was also earlier an investment banker. So after completing my management degree, I was an investment banker. So I knew that how the financial market was operating earlier, because the most of the cases the financial was market was dominated by the banks, and the banks were not present in the rural areas. That was the main problem. We used to say unbanked region, हम लोग बोलते थे unbanked region बोलते थे. क्योंकि आप चले जाइए कश्मीर के पार्ट, डाउन साउथ या नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे चले जाइए, सो द थिंग इज दैट यू वुड फाइंड दैट देयर विल बी अ काइंड ऑफ द थिंग व्हिच इज नॉट
means you will find that those are the areas where you cannot get any kind of the banking finance. So that is the kind of the position we had earlier. But today we see that the things has totally changed because it has been totally disrupted, and the many organization has come up. That is why we said that fintech organization. So design thinking is playing a very important role that we need to understand. So this is my introduction, that as you have already seen that. Now, stretch, support, and humor. These are three parts that we need to understand: stretch, support, and humor. Because when the management is giving some stress to do something, there has to be support and there has to be humor. Otherwise, the thing is that it will not come. It will not come in that way that we are actually planning to do. So design thinking is very important in that way, that we need to understand it's a kind of the stretch, support, and humor, and the organization need to understand it very well. So design thinking is playing a very important role to change the culture of the organization also. Because if you are changing the culture of the organization, you are actually applying something to happen. Because most of the organization we have seen, there is no actually creative culture. The innovations are not taking place because management is not approving that kind of the culture to flourish. That we'll see later, we can discuss later how to change the this kind of barriers. So what is most important for the small organization or the startups to create that kind of the culture? That is, we said that we need to stretch our goals, and there has to be support, and it has to be the humor. It is not a kind of the intense kind of the environment that you are trying to do something, you are trying to solve something, and you are solving the big bang problem. It is not like that. That cannot happen. So that is how the it means that is why it is very important to understand the design thinking. Because see, simple example, if you take the any kind of the user interface, suppose any kind of the movie ticket booking app, if that app is means looking dull, I think that people, half of the people will not be interested to book the ticket. However, the app might be very effective. वो जो ऐप है इफेक्टिव हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, बट लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा. बिकॉज द थिंग इज दैट दे नो दैट द ऐप इटसेल्फ इज लुकिंग सो डल. आज के डेट में अभी किसी होटल का मतलब इंटरनेट में किसी का वेबसाइट देखे, किसी होटल का, कोई भी 5 स्टार 3 स्टार किसी होटल, यदि वो मतलब वेबसाइट इज लुकिंग नॉट सो एट्रैक्टिव, half of the people will not book that online accommodation in that hotel. In spite of that, the hotel is very good and has got all the facilities. उस होटल में सब कुछ फैसिलिटी रहते हुए भी वो वहां पे बुकिंग नहीं होगा, उसका सेल्स कम हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज द पीपल आर not getting interested. So there has to be a kind of the humor in every place. So that is why it is very important that you must understand that not only you need to change the culture of the organization, but also you need to imbibe it in the every beat of the process of your product and the service. That is how you can make the things much more simpler, user friendly, accessible to the greater mass. And that's what it happened. आज के डेट में आप देख लीजिए, विच एवर द प्रोडक्ट इज गोइंग टू द मस, they are user friendly, they are easy to use, and they're very simple. However, the product is complex, but they are very simple to use. And that is what you have to do. You have to make a stretch, support, and the human. This is a combination. Very important. Now, Steve Jobs once he said that design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Very important. जनरली हम लोग बोलते हैं कि डिजाइन थिंकिंग एक पार्ट है. डिजाइन स्कूल में जो लोग जाता है, दे स्टडी फॉर द 4 years डिजाइन थिंकिंग एंड वेरियस काइंड ऑफ द डिजाइन मींस टेक्निक दे लर्न, or they learn that means UX designing and various kind of the part of that. But the thing is that actually that design is how it works. You need to understand how you are making it working for the people. दैट इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आपका जो प्रोसेस है, आप कैसे इसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर सक्सेस आपका बहुत डिपेंड करता है. सो डिजाइन इज नॉट दैट वे दैट हाउ इट ओनली लुक्स और हाउ इट feels. Definitely there is a parameter, there is a kind of the implication of how it looks and how it feels. Definitely we are not undermining that. हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं किसी चीज डल लुक होगा मगर अच्छा होगा. नो, नॉट एनिंग दैट. दिस इज ओनली प्राइमरी थिंग. ये सरफेस लेवल है
कैसे ये दिख रहा है और कैसे ये फील हो रहा है, primary level, surface level. If you go inside that, you understand design thinking is something that how it works, that you have to design, because it's a kind of the step by step the process, and design thinking is not a linear process. It's an iterative process, because आपको एक बार डिजाइन करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप आइडेट करना है, डिफाइन करना है, आइडेट करना है, फिर उसको मतलब प्रोटोटाइप आपको एंड में तैयार करना है, और देयर इज आल्सो अनदर स्टेप दैट इज कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन. समबॉडी मतलब से देयर इज इम्प्लीमेंटेशन, और बहुत जगह नहीं भी बोला जाता है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ द स्टेप यू हैव टू गो. Now after that, it is not 100% sure that you are doing it right. So the thing is that you need to do it again. That is the iterative process. Unless until you have 100% sure this the process is 100% right, the product is right fit for the people, and you are doing something good for the people. Now the thing is that is very important that it's a kind of iterative method. It's not a linear method, एंड यू कैन नॉट स्टॉप बाय डूइंग ओनली वंस. आप एक बार करके इसको बंद कर देते हो, ऐसा नहीं है, आपको बार बार इसको करना पड़ेगा. दैट इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ बिजनेस थिंकिंग एंड डिजाइन थिंकिंग बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि बिजनेस थिंकिंग जो है वो है प्रॉब्लम थिंकिंग. प्रॉब्लम थिंकिंग मतलब प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. बेसिकली हम लोग सोचते हैं क्या प्रॉब्लम है, what is the problem in the business, define the problem, and then think about the solution and problem. That is how we are trained. हम लोग ऐसे ही ट्रेंड है. मतलब when we actually think about to solve any problem from our childhood, मतलब बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है कि प्रॉब्लम मतलब पर्टिकुलरली हम लोग जब मैथमेटिक्स करते हैं, मतलब जब हम लोग बचपन में रहते हैं तो बोला जाता है क्या, प्रॉब्लम को एक नहीं 5 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन है. So the thing is that is very also true. The thing is that so must think about the problem and there is a solution. But generally हम लोग जब बड़े होते हैं तब we only think about the problem and how to get the solution. That is how we are naturally trained to solve the business problem. But design thinking problem is that before that you need to understand the problem. Before you need to understand the problem, then solution, then test, and then again understand that how you do it. So there is a kind of the iterative process, and step by step you have to go there. So there is a difference between the way we think to solve the business problem and the design thinking urges us to solve the problem. मतलब डिजाइन थिंकिंग के बारे में मतलब सोचना और नॉर्मल वे में सोचना में थोड़ा डिफरेंस है. वो डिफरेंस हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली वी कैन नॉट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एंड गेट द सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे सोल्यूशन एक बार नहीं निकल सकते. यहाँ पे सोल्यूशन हम लोगों को शायद बार बार निकलना पड़े. आइटरेटिव प्रोसेस है, टेस्ट करना पड़े, फेल भी हो सकता है, बिकॉज डिजाइन थिंकिंग में ये बोला जाता है कि मतलब इट इज नॉट अ फेलियर. और इसको ह्यूमन सेंट्रिक हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वी से दैट it is never a kind of the failure, it's a kind of a only test, or it's a kind of the only approach. The approach might be wrong once, twice, thrice, but we are not failing it. So iterative process is very simple. One example is there, बल्ब. थॉमस एडिसन जब बल्ब मतलब इन्वेंट किया था, ऑलमोस्ट 1100 टाइम्स वो एक्सपेरिमेंट किया था. अब जब बल्ब वो इन्वेंट किया, देन देयर इज अ काइंड ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस. सो पूछ रहे हैं सब लोग से, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ट्राइड इट आउट. ही सेड दैट समथिंग अराउंड 1100. तो लोगों बोला 1100 इतने बार आप फेल कर गए मतलब. ही सेड दैट आई नेवर फेल्ड, I learned how to light the bulb in 1100 ways and I tried for that. So there is a feedback from every try, and he tried to enlight the bulb. And that is why the design thing, it's an iterative process, and ultimately he did it. So numerous way, but it was not a failure. It was a kind of the effort and getting the feedback and try again. So it's a kind of the iterative process until unless you get the best product or the best service from the market. So there is some cost involved. मतलब हर time ये free नहीं हो सकता, because the thing is that means you are doing something, creating prototype, put into the real scenario, then again means doing it. So there's some cost involved, definitely. But the thing is that when you are doing it, you are making sure this product is going to be a success in the market. ऐसे ही सब मतलब organization. It is not like that once you do that and this product will be a kind of the huge success in the market. ऐसा नहीं होता. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा फेलियर हो चुका है.
Even if you see the biggest organizations, they had a failure, multiple failure. इंडिया में आप देखे जाए बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक द टाटा, दे हैड आल्सो सो मेनी प्रोडक्ट्स हु कुड which could not do well in the market, which could not do in the market. And also you google the also the product, they have a launch also the various kind of the product which are not actually doing in the market. So these are the kind of the things that we need to understand, that it is not that every organization will have a very successful product, because you have to try it again and again to get the best product based means market match or the best fit in the market. That's a very important point. Now, if you see the world's most innovative countries, this is a kind of the index. It came in 2021. यह 2021 में आया था इंडेक्स में. इस इंडेक्स में दिया जाता है कि मतलब स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, यूके, साउथ कोरिया, देन फिनलैंड, सिंगापुर, दिस आर द मोस्ट इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे इनोवेशन क्या होता है? बिकॉज दैट इज हाउ दैट दे हैव डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ द कल्चर. And the problem is that we are not able to cope up with this kind of the environment. India में अभी तक उतना नहीं हुआ, हालांकि we are trying to do that. It is not like that we are not doing anything. We are actually getting, and definitely मतलब future में we will be getting much more momentum, and it will be one of the biggest kind of the startup means kind of the center in India, we means in the world, that I am sure. But still the मतलब statistics ये थोड़ा 3-4 साल का पुराना है, मगर ये दिखा रहा है कि उतना मतलब हम लोग अभी तक उस लेवल पे नहीं गए. बट वेयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशंस, दिस कंट्रीज आर मोस्ट इनोवेटिव इन द वर्ल्ड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. You have to be innovative and creative. See the organizations. These are the organization: Apple, Google, means Alphabet, Amazon, Microsoft, Tesla, Samsung, IBM. These are the very innovative organization, and that is how they are actually sustaining and ruling the market. That is what had happened in last 20 years. I was telling that कुछ देर पहले मैंने बोल रहा था कि 2003-4 साल मतलब 2003-4 या मतलब like the 20 years back, there was no such big Apple. गूगल भी उतना नहीं था, ये होता, बट गूगल मतलब उतना खास नहीं था. Amazon तो स्टार्ट ही हुआ था मतलब some 80s में, 1980s में. That time it was not, nobody thought that it will rule the market. टेस्ला सोचा नहीं था दिस काइंड ऑफ द इको फ्रेंडली मतलब कार दिस विल रूल द मार्केट, मोस्ट एक्सपेंसिव कार. So how come this organization are actually ruling the world now? They are ruling the world because they are innovative, they are creative, they are creating the products which are actually satisfying the need of the people in a very big way. So that is how they are number one their respective field. So that is why that it is very important that you have to be innovative and creative. Now let me tell you one thing. These are the very big organization we have seen. The chart shows that all the big organization. But innovation, maximum innovation also happen in the small organization. Because it's a very simple kind of the fundamental rule that we need to think. In the corona time 2020, you have seen so many small organizations actually vanished from the market. They could not survive because they could not have that kind of the cash at their hand to survive for a period of 3 years or the 2 years, when everything was not working in a proper way. Supply chain was actually not working, the world money supply also got stuck, and things are not moving from one place to another place. Now so many organizations also try to make it in a different way, and they not only survive but also thrive. So small organization can do much wonder. Because if you see in India, financial organization, those financial market basically is ruled by the banks. It was ruled by the banks basically. All the big banks, including the nationalist bank, they are basically controlling the whole financial market. Then the fintech means revolution came. Fintech revolution gave the power to the means common people, normal people, so that they can do every financial transaction through their mobile without going bank. So that's the kind of thing. Because if you go to the down south, if you go to the northeast, like that Himachal Pradesh and some parts means Shillong and all, you won't find any bank there. So people had got earlier had a mobile bank. Mobile bank means that they used to go, they used to take a kind of the car or kind of the lorry kind of the thing, and that used to have the banking facility. They used to do once or twice in a month or week like that.
Now the thing is that people are using all kind of the fintech apps, and they are doing all kind of the bankings in a remote vintage, means remote part of the country. यही है आपको ये ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएटिविटी लोगों को ये बेनिफिट दिया है। और ये कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट नहीं है। आप यदि मतलब फिनटेक देखिए, इंडिया में भी जो जो बड़े फिनटेक हुआ है, यूनिकॉर्न में जो है और बड़े फिनटेक हुआ है, वो लोग भी खास कोई मतलब 20 साल से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए इन द मार्केट हार्डली 10-15 years बैक। आप पेटीएम को ले लीजिए, भारत पे कुछ भी ले लीजिए, these are the biggest fintech Indian organizations. They have done very well in last 10 years, 10 to 15 years, that's all. So ये भी मार्केट का गेम को चेंज किया। So innovation or creativity happens only in the big organization like Apple, Google. It is not like that. Basically it happens also small organization। और क्यों होता है? एक simple fundamental rule है कि they have to survive। They have to survive. If anything happens in the market, small organization cannot survive because they do not have a huge pile up the cash. Even they cannot fight with the big players. So they need to, when they need to mean survive, when they need to thrive, they have to be creative. They have to be innovative. Creation, innovation उसमें आना चाहिए, तभी जाके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट होने को एक अच्छा मौका मिलता है। दैट इज व्हाई वी सी दैट ये एप्पल भी जो था, एप्पल वाज अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन स्टीव जॉब्स स्टार्टेड। धीरे धीरे तो ये बड़ा हुआ। आप सब लोग देखे इंटरनेट में आता है Amazon started in a small room। Basically there is two computers। Now today Amazon actually is ruling the world। How? Because they are changing the way the shopping happens, and they have the all kind of the products under their brand। मतलब उसका टैगलाइन क्या बोलता है, मतलब यूजर एक्सपीरियंस बेसिकली। सो Amazon में मैं देख रहा था, यू कैन ऑल्सो सी that it is there in the YouTube how the people can actually purchase in the Amazon with the app। So you go to the any Amazon in US, kind of the there is also a kind of the means retail shop। When you take the product, automatically your mobile app is on, it will say that you have taken that product। if you take means put back that product, it will go off from your app। so after that, if you take 5 products, it will be on your cart automatically। Now you go to the payment section and scan your mobile, automatically it will be paid from your Amazon wallet। So that is how it is done। So it is making life much more simple। मतलब ये life को इतना simple कर रहा है, so people are finding very easy to use this। So that is why we said that it is not that only big means innovation happens in the big organization, it happens in the smaller organization, and smaller organization इसको use करके ही बड़ा हो सकता है। That is one of the way that हम लोग यदि history में देखें तो that is how it happened। So innovation और creativity के ऊपर आप लोगों को बहुत मतलब फोकस देना होता है, बिकॉज स्टार्टअप के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिकली व्हाट इज द लेटेंट नीड ऑफ द कस्टमर और द कंज्यूमर। then you need to actually means understand, after understanding the product, then you need to form that kind of the product or service। there is a kind of the called customer mapping or customer there is also customer journey, we'll be talking about that also। now barriers to the innovation, there are so many barriers: lack of communication, lack of employee involvement, middle managers are not ready to change, there is a risk formulation, and the high bureaucracy। These are the very important part। There are some parts that I said, that cultural part, because people do not want to change, there is a resistance from the not only the mid management but also the top management। when I am a consultant, I do the consulting, I have seen that people having resistance when I am talking to the various kind of the promoters, particularly SME, small and medium organization. I have seen that they are not ready to accept any new kind of the ideas, they are not ready to actually give any kind of the space for experiment। that is not there, they are not doing, because their structure is very rigid and their structure is very much the hierarchy, there is no there is not many hierarchy, but the thing is that it's a very kind of rigid, all the decisions are taken by the MD or the director generally, and he is not going to listen, because the way he did in last 30 years, or the way his father or the parents did or the forefather did, in that way he is running the business। that is the scenario in most of the cases in Indian SME, small and medium enterprise, that I have seen in my particular, in my consulting career। even when I was in a banker, I used to talk to the various kind of the business owners। so the business owners,
there are few business owners who like to change, who like to have the new ideas, or who like to experiment with that. अब बहुत सारे लोग मतलब चेंज होना भी चाहता है, सोचता भी है चेंज करेंगे, मगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे आर नॉट रेडी. Now the thing is a very simple part. If you are not experimenting, you will not get to know is it right or wrong, is it having the good effect or it is having the different kind of the effect. So you need to do the experimentation. अब एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे, देयर हैज टू बी सम रिस्क, फाइनेंशियल लॉस. आपको ये एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा. And that is the pain area. That is the pain area means that people do not want any kind of the risk to lose some money or lose mistakes some kind of the risk. नहीं लेना चाहते हैं लोग. यही मैं देखा बिकॉज ऑन द मतलब जब डिस्कस करते हैं टेबल पे, सो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल एक्सेप्ट करता है, बात भी करता है, बट जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तब थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा रिसोर्स यूज करना ही पड़ेगा. जब आप रिसोर्स यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप राइट डायरेक्शन में हो या रॉन्ग डायरेक्शन में हो. ये जब रिसोर्स यूज करने का टाइम आता है तभी मैक्सिमम लोग पीछे आ जाता है. So that is why probably we do not find many innovative creative startups, because ये तो encourage ही नहीं किया जाता. हम लोगों के कंट्रीज में, मतलब हम लोगों के देश में बेसिकली एजुकेशन सिस्टम अभी भी जो है वो है बेसिकली जॉब ओरिएंटेड. बिकॉज आपको बचपन से सिखाया जाता है कि यू हैव टू दिस काइंड ऑफ द जॉब, दैट काइंड ऑफ द जॉब, यू हैव टू बेसिकली डॉक्टर, इंजीनियर एंड डू द जॉब. सो दैट इज हाउ वी आर ट्रेन्ड बेसिकली. हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए एजुकेशन प्राइमरी लेवल से नहीं है. आजकल के डेट में थोड़ा डेवलपमेंट है, चेंजेस है, पीपल वांट टू बी द इनोवेटर, पीपल वांट टू डू स्टार्टअप, दे आर ट्राइंग टू बी द एंटरप्रेन्योर. मगर मुझे मालूम है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कितना प्रॉब्लम से एक आदमी को गुजरना पड़ता है. बिकॉज आई नो दैट आई एम हैविंग टू कंपनीज without any kind of the funding I started, and I know that how difficult, even that you have idea, you do not have the capital, even you know that how to do the marketing, you cannot do the marketing because marketing needs a kind of the funding for that, and the environment is not that kind of the supportive where you can do. There is so many barriers. So entrepreneurs need to think in a such a way, but I am not saying there is no opportunity. मैं बोल रहा हूँ opportunity है, आपको उसको sense करना चाहिए. You know the Reliance, धीरूभाई अंबानी. धीरूभाई अंबानी ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया कैसे, फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम जीरो. वो तो मतलब सऊदी में वहां पे तो पेट्रोल देता था. फ्रॉम देयर ही केम बैक टू इन इंडिया एंड स्टार्टेड दैट. और 30 साल में वो जो बनाया, मतलब कोई भी बना नहीं पाया 150 साल में, आई थिंक सो. So there is opportunity. So you need to sense the opportunity and how to utilize that, and that is how that the culture is that. And design thinking gives you that kind of the flexibility to think in a different direction, in a fresh way, and need to go to the root of the problem. It is not like that the design thinking allow you to do something innovative, creative, or something out of the way. It cannot. Nothing can happen out of the way. It will happen in the way, in a different way only. But there is a kind of the barriers. The barriers are different kind of the barriers. That could be communication barrier, resistance to change, bureaucracy, lack of the employee involvement. In many cases मैंने देखा जब consulting करते हो organization में employees are not means involved, they are not engaged. In many cases the engagement rate is very low, because when it comes it is not properly communicated down the line that what will be the impact of the change, how the employees will have the positive impact, and that will in turn affect them. So ये बोला नहीं जाता है कैसे होगा चेंज, कैसे होगा, उसको इफेक्ट कैसे करेगा, इस सब को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया जाता. कम्युनिकेशन लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एंड समटाइम दैट लाइन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. मतलब वो जो लाइन है वो प्रॉपर्ली लाइन नहीं होता, तो वहां पे कम्युनिकेशन नहीं होता. जब कम्युनिकेशन नहीं होता तो एम्प्लॉय कैसे होगा, और वहां पे एम्प्लॉय जब मतलब इन्फॉर्म्ड ही नहीं है तो उसको सोचने का मौका ही नहीं मिला जाता. So that is the kind of the scenario that we need to. That is why we say that there is a huge change in the means there should be a huge change in the culture of the organization if you want to actually use the design thinking. It design thinking koi matlab is not implementing some kind of software, using statistical software, getting analysis. It is not like that. Yes, there is definitely there is a part of it, बट आप जिस एनवायरमेंट में कर रहे हो उस एनवायरमेंट को पहले एडेप्टिव बनाओ.
एडेप्टिव बनाने के लिए उसका एनवायरनमेंट को चेंज करो, देन पुट ऑल दिस काइंड ऑफ द philosophy or the thinking kind of design thinking means process, then it will actually lead to a good result. Otherwise उतना आपको नहीं मिलेगा, that will be only kind of the what we say that दिखाने के लिए कि हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब उतना इफेक्टिव नहीं होगा. Because this is how that this organization Apple or Google, they put into the practice. They do not say that this we are doing design thinking this and all, they put into the practice and show that we have done it. So it's a kind of the implementation, very important point. It is not about the theory that we talk about in a class or anything, it is about project to implement. So that is why it's very important, implementation. Now the thing is that if you means once Einstein said, if I had 1 hour to solve a problem, I'll spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes about the solution. Very important. आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है तो उसके लिए मतलब इफ यू थिंक अगेन अगेन अबाउट द प्रॉब्लम, आपको सॉल्व सोल्यूशन आ जाता है. सो दैट इज व्हाट द डिजाइन थिंकिंग सेज ऑल अबाउट. थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. इन मोस्ट केसेस ये प्राइमरी मतलब मैंने देखा दिस इज अ काइंड ऑफ द प्राइमरी प्रॉब्लम विद द मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स. ये जितने भी बिजनेस ओनर्स है मतलब दे डिजाइन द काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, but the thing is that they don't know why they are doing that. Most of the cases they do not identify the proper kind of customers. उसका कस्टमर कौन है उसको पता नहीं है, and that is the problem. Most 80% cases हमने देखा, that could be a big organization also, even they don't know who is their customer, who means their service and product for whom, उसको पता नहीं है, and that is how the organization is running. और ये जब रन होता है एक स्टेज तक चलता है, फिर कंफ्यूजन इतना हो जाता है, देन दे बिकम स्टैग्नेटेड, दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई टू गो, हाउ टू गो एंड व्हाट टू डू. बिकॉज इनिशियल लेवल में उन लोगों के पास शायद फंडिंग रहता है, शायद मार्केट में प्रोडक्ट और द जो सर्विस है वो किसी को मतलब फिट हो जाता है, इनिशियली सक्सेस उसको आ जाता है. बट द थिंग इज दैट आफ्टर सम टाइम एक्चुअली दैट मतलब ग्राफ जो है वो फ्लैट हो जाता है, बिकॉज उसको आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है प्रॉपरली कौन उसका कस्टमर है. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमने प्रैक्टिकली देखा है. मतलब ये सुनने के लिए बहुत मतलब अजीब लगता है, कौन मेरा कस्टमर है पता नहीं. यस, कौन आपका कस्टमर है आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए, उसको पहले आप आइडेंटिफाई कर लिया, उसका प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर लिया, आई थिंक दैट आपका मोस्ट मतलब सबसे बड़े काम आपने कर दिया. क्योंकि जो आपका कस्टमर है उसका जो पेन एरिया है, प्रॉब्लम है, वो आइडेंटिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वो काम एक बार हो जाए देन यू कैन डेवलप द प्रोडक्ट, एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन ऑल्सो. बहुत सारे जगह में मतलब वन सिंपल एग्जांपल कि जब हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ते थे बहुत साल पहले, सो दैट टाइम बहुत मार्केट में मतलब शोर हो रहा था कि देयर इज अ न्यू कार, नैनो इज कमिंग. नैनो क्यों आ रहा है, उसका पंचलाइन में आ रहा था कि मतलब पहले पंचलाइन ऐसा बोल रहा था कि सबसे सस्ता कार. सेकंड बोल रहा था कि यू डोंट नीड टू राइड टू व्हीलर, आपको दो व्हीलर मतलब टू व्हीलर जो है बाइक चलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दाम में आपको कार मिल रहा है. सब आप जब बाइक चला रहे हो तो maximum 2 people can go, but in a car at least 3-4 people will go, and that to the same price. So the objective was there to convert the bike riders into the car drivers basically. When the bike riders, they want to actually make the car passenger. मगर वो जो प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए थिंकिंग जो था मगर एक्चुअली वो कर नहीं पाया. इट डिड नॉट हैपन. जो बाइक चलाता है वो बाइक चला के ही सेटिस्फाइड है. दे थिंक दैट राइडिंग बाइक इज समथिंग डिफरेंट एंड राइडिंग कार इज समथिंग डिफरेंट, एंड दोस थिंग्स कैन नेवर मैच. सो वहां पे जो आइडेंटिफिकेशन था, फिलोसॉफी था, वहां पे कुछ प्रॉब्लम था. सो दैट इज व्हाई इट वाज नॉट दैट बिग सक्सेस इन द मार्केट, वी नो दैट. बट ये निकलने पहले मार्केट में बहुत ब्रांडिंग किया गया था. हर एक मतलब आई यूज्ड टू सी द ऑल द न्यूज़पेपर मैगजीन एवरी टाइम business mags, it was coming as a big, it is coming with a big bang. But the thing is it never happened in that way. So there was some problem in understanding the customers and customer need.
So that is why I say that you need to identify customer, and it's a very difficult and most important part. Most of the cases in my career, I have seen that people are not able to identify their customer. उसका customer कौन है उसको ही identification नहीं कर पाते. And many cases I have seen in the big organization, people actually make the product with some kind of the research and some kind of the intuition. अब रिसर्च तो सही है, इंट्यूशन में कहीं पे हमने वो किया था, पहले पिछले ऐसा हुआ था, ये सब आ जाता है, एंड दे डू समथिंग which is not relevant. ये होता है because intuition also plays a very important role in when designing this kind of thing. I have seen this is a practical. So ये इंट्यूशन के चलते बहुत सारा जगह में ब्लंडर होते भी देखा हूँ. So that is why we need to understand that आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब क्रिएटिविटी इनोवेशन दोनों अलग है, देयर इज अ डिफरेंस. क्रिएटिविटी क्या है? इमेजिनेशन है, आप इमेजिन करते हो कि कैसे ये हो सकता है. इनोवेशन क्या होता है? आप प्रैक्टिस करते हो. दिस इज अ काइंड ऑफ द थिंग्स, नथिंग टू डू इन इमेजिनेशन. क्रिएटिविटी थिंकिंग समथिंग न्यू, आप कुछ नया कर रहे हो, और इनोवेशन मींस इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू. No ideas for the creativity, put them into reality, and innovation is the creative ideas to put into the practice. Innovative is the process, and producing productive process is innovation. It cannot be measured creativity, but innovation can be done. Creativity does not need money, but innovation needs. मतलब ये जो डिफरेंस में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है. इनोवेशन जो है वो है मींस मच मोर practice oriented process. It is not that any kind of the theory or any kind of the imagination, rather than putting into the practice. So design thinking is also like that. It is not only about the philosophy, it's not about the any kind of the any kind of the measure that we can think, but put all the ideas into the practice and do the things in a real life. So that is why we get the step that prototype means and testing, because the making the prototype what it should be and how actually it works. So that is the testing. So that is why design thinking is nothing more than the application. It is application oriented, it is practical oriented, and that is why it needs some money. Because the thing is that when you want to make any prototype, it cannot be without money. मतलब कुछ तो चाहिए. Because I can tell you one thing, there is one soap, मतलब एक मतलब soap था जो I think it was a Fiyama. So when they want to introduce the Fiyama, what they do, these FMCG companies, they do not introduce this product in a पैन इंडिया बेसिस. मतलब पैन इंडिया में पूरा ये लोग मतलब पहले इंट्रोड्यूस नहीं करते. दे इंट्रोड्यूस इन सिलेक्टिव एरिया फर्स्ट विद सिलेक्टिव पीपल. मतलब कुछ लोगों को लेकर कुछ सिटी में पहले सर्वे के लिए मतलब टेस्ट करता है. सो मतलब दे इंट्रोड्यूस इट समवेयर मींस आई थिंक कुछ सिटीज में, 3-4 सिटीज में, मतलब एक वहाँ कहीं कहीं से 200-300 लोग लेके 1000 या मतलब 1500 या 2000 का सैंपल लेकर दे टेस्ट किया. देन दे फाउंड आउट द सोप इज वेरी गुड बट इट इज मेल्टिंग, मतलब पिघल जा रहा है. So they again actually remanufactured it, put everything that in a different way, and they made it to suit for the Indian climate. मतलब इंडियन क्लाइमेट के लिए ये लोग जैसे सूट करेगा वैसे ही वो लोग मतलब अपना सोप बनवाया. So that is how it is done. So मतलब taste, it is a kind of the thing that it's a kind of the real process. This is not nothing that you can actually give any kind of the idea, you kind of the imagination or any kind of the vague picture. It's a very concrete, solid and practical approach. That is the innovation, and that is how the design thinking should be. Now today, why innovation, why it is important? I said मतलब 3 years 4 years back there was to be a COVID. मतलब कोविड का टाइम 2020 में जो हुआ था, तो वहीं से ये टर्म्स चालू हुआ. उसी टाइम से VUCA वर्ल्ड, complex volatility, ambiguity and uncertainty. This is the nature of today's business. आज के डेट में this is a very important, ये जो टर्म है VUCA वर्ल्ड that has come, because आज के डेट में ये आपका बिजनेस का मतलब क्या बोला, this is a kind of the characteristics, मतलब ये आपको लेकर ही चलना पड़ेगा. Because this is, we have never seen this kind of the uncertainty before. Because आज के डेट में आप जो प्रोडक्ट निकाल रहे हो मतलब वो कल ऑब्सोलेट हो सकता है.
बिकॉज आप मोबाइल देख लीजिए ना, एक मोबाइल मतलब कितना दिन चलता है। आप यदि एक मोबाइल का एक कोई मतलब वर्जन दिया, हार्डली 2 महीना 3 महीने उस पर नया वर्जन आ जाता है। So there is a rapid development. So the world is totally very complex, ambiguity, because full of ambiguity. You don't know that what is matlab, what is actually what is the you do not have the proper clarity. So this is a kind of the characteristics of today's business world. Very complex, very volatile, rapidly changing, ambiguous, not clear, and uncertain. You don't know. See that first generation Honda car. This is a car we have to get that 30 years back. One card used to take 3 to 4 years to come because to develop everything. आपको कोई इंडियन एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब मुझे खास करके मेरे को याद है, वी यूज्ड टू हैव द चेतक स्कूटर। हम लोगों के पास एक चेतक स्कूटर था जो मेरा पिताजी ने खरीदा बहुत साल पहले 80s डिकेड में। नाउ द थिंग इज दैट हम लोग को वेट करना पड़ता था आई थिंक 8-9 महीना। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट आप शॉप में जाओ खरीद के लाओ, नो। हम लोग को उस टाइम में 8-9 महीना मतलब एक स्कूटर खरीदने के वेट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको एप्लीकेशन फिलअप कर देना पड़ेगा। फिर वो एप्लीकेशन बैंक के पास जाएगा, क्योंकि कोई फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन तो था ही नहीं। आपका पास खुद भी पैसा हो, देन ऑल्सो यू हैव टू वेट फॉर दैट, बिकॉज आपको वो कंपनी में बोलना पड़ेगा, देन यू नीड टू वेट फॉर मिनिमम 8-7-8 months टू गेट दैट स्कूटर। और फाइनेंस आपको शायद मिले या ना मिले, कोई सर्टेनिटी नहीं था। सो दैट वी हैव सीन दैट हैपेंड। So this is a kind of the scooter, normal scooter, or even the moped also. You cannot get it right means right away there. You have to wait 6 months, 8 months, waiting time. We used to say, हम लोग बोलते थे waiting time. और आज के डेट में जाए कोई वेटिंग टाइम है ही नहीं। मतलब यू गो टू द इवन, मतलब जाने के लिए की मतलब जरूरत नहीं। अब घर पे बैठे रहो, घर पे बैठे आप यू कैन ऑर्डर इट इवन, मतलब आप ऐप से ही ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर में कार्ड आ जाएगा। सो इट इज रैपिडली चेंजिंग। हम लोग जो बोलते हैं पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब इंट्रोडक्शन से डिक्लाइन स्टेज इज वेरी स्मॉलर राइट नाउ, बिकॉज पहले तो इंट्रोडक्शन में आता था, फिर पिक करता था, मैच्योरिटी में जाता था, फिर जाकर डिक्लाइन होता था। दैट यूज्ड टू हैपन, यूज्ड टू टेक ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आज के डेट में आप जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपको पता नहीं मतलब इंट्रोडक्शन के साथ अब मैच्योरिटी में कब पहुंचेगा, और वहां से मतलब कितना जल्दी उसको डिक्लाइन भी हो सकता है, बिकॉज आपका प्रोडक्ट के पीछे शायद आपका कंपनी या दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट तैयार खड़ा है। आप यदि नहीं लॉन्च करोगे, दूसरा कोई लॉन्च कर देगा। यदि ओप्पो नहीं करेगा तो वीवो कर देगा, नहीं तो सैमसंग कर देगा। सो दिस इज अ मार्केट, complex, competitive, and we say that red ocean. So that is why another concept has come, which is also related with the means this thing, design thinking, blue ocean strategy, because that is how we can do that. McKinsey का concept था, McKinsey one of the consultants said that, but right now it's a kind of the red ocean, because आपका product life cycle is very limited. आप प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करोगे तो दूसरा कोई कर देगा, आप एडेप्टिव नहीं हो तो दूसरा कोई कर देगा। नोकिया कभी सोचा भी नहीं था, मार्केट लीडर था 2000 till 2013-14 तक, आई थिंक 13 तक तो था ही था, मतलब मार्केट लीडर था। हम पहले मोबाइल खरीदे, मतलब जो है वो नोकिया 3310, दैट वाज अ काइंड ऑफ द हिट प्रोडक्ट, मतलब एवरीबॉडी यूज्ड टू हैव। और नोकिया भी नहीं सोचा था, कोई भी, हम लोग भी नहीं सोचा था एक दिन नोकिया रहेगा ही नहीं, बिकॉज 95% का मार्केट शेयर उस पर था। सैमसंग वैमसंग तो छोटा, मतलब कोई मार्केट शेयर था ही भी नहीं, सबके पास मोबाइल, लिटरली द लीडर। और हायर सेगमेंट में मतलब कुछ लोगों के पास डिफरेंट काइंड ऑफ द फोन था, बट मास लीडर वाज नोकिया। और आज के डेट में देखिए नोकिया इज टोटली ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम द मार्केट। कोडेक, पहले जो फिल्म था कोडेक ही यूज किया जाता था, शादी ब्याह कहीं पे जाओ फोटो खींचने के लिए कोडेक का रील चलता था। अब तो डिजिटल फोटो नहीं, वो फोटो का तो पूरा बिजनेस ही बंद कर दिया। सो दैट इज व्हाई इट हैपेंड, बट इट टुक अ टाइम। लेट मी टेल यू दैट, मतलब नोकिया को बोला गया था डिजिटाइज होने के लिए, मतलब टच स्क्रीन लाने के लिए, नोकिया ने लाया नहीं। कोडक को बोला गया था डिजिटल फोटो लाने के लिए, कोडक लाया नहीं था, बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल सिटिंग इन नंबर 1 पोजीशन। कोडक लाया नहीं तो कोडक को ही मार्केट में चला जाना पड़ा, बट दैट हैपेंड इन ए लॉन्ग टाइम बैक, एंड इट टुक सम टाइम। मतलब ये होने के लिए थोड़ा टाइम लिया था, कोडक एक दिन में वैनिश नहीं हो गया था। मगर आज के डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे, वो वैनिश होने के लिए टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसको नया तरीके से, नया प्रोडक्ट, नया फीचर से नहीं लाओगे
तो आपका कंप्यूटर उसको ला देगा. सो द प्रोडक्ट और द सर्विस जो भी है, इसको आपको मतलब डे बाय डे इसको improve करना चाहिए. You need to add more features, you need to add the more relevance with your product and service, so that consumer becomes satisfied and they can actually satisfy their needs and wants. That is the very simple kind of the fundamental truth. आज के डेट में आप सेटिस्फाइड होकर नहीं बैठ सकते. इसी के लिए डिजाइन थिंकिंग को बोला जाता है आइटरेटिव प्रोसेस. आइटरेटिव मतलब क्या है? यू गो ऑन developing your product or service round the clock. आप करते जाओ. And that is why the things that every organization is doing. They're not setting model. आज के डेट में आप विंडोज देखो, आज एक वर्जन निकल रहा है, कल एक वर्जन निकल रहा है. Every 2 years they are coming out a new kind of the windows. You see the laptop, that HP laptop, the HP whatever, HP Dell, they're coming out. So everybody is coming out. There is a very little kind of the gap of introducing the new product from the earlier product. मतलब gap है ही नहीं. So that is what that it is very important. So आप creative होने के लिए मतलब होने छोड़ के आपको कोई रास्ता भी नहीं है. If you're not creative, if you're not innovative, probably आप market में रह ही नहीं पाओगे. First of all, if you're a startup, you need to have to be a creative. Startup होने के लिए starting में ही आपको problem, बहुत problem आएगा. The problem is that particularly you might not have that kind of the big fund. So the thing is the marketing will be difficult. When you take the people, means if you ask the people to join your organization, people might not be ready because you are not a brand. So these are the HR problems, these are the various problems. तो ये सब प्रॉब्लम को आपको कैटर जब करना है, मतलब सॉल्व करना है, द थिंग इज दैट यू हैव टू बी इनोवेटिव. नाउ इनोवेटिव करके आपने तो अपना ऑर्गेनाइजेशन छोटा मोटा ठीक ठाक बना लिया. नाउ यू हैव सम पीपल, यू हैव प्रोडक्ट, और यू हैव सम अमाउंट ऑफ द कैश फ्लो. द नेक्स्ट स्टेज इज द कंपटीशन. आप इस कंपटीशन को यदि इनोवेटिवली बीट नहीं कर पाओगे, so your competitor will kill you. So that is how that the things has to go. Now the thing is that there are another threat after that also, so that when you have grown a little big, you are in some kind of the maturity stage, or you are a good player in the industry, there is a threat that bigger player might acquire you. So that's what it happens. So that is why you have to actually be on your toe round the clock. आपको आपका मतलब पैरों के ऊपर हर टाइम रहना चाहिए. And there is no other way that you cannot be innovative. आपको इनोवेटिव होना ही पड़ेगा. कोई मतलब आपका ऑप्शन ही नहीं है. आपका प्रोडक्ट में होना पड़ेगा, प्रोसेस में होना पड़ेगा, आपको सस्टेन के लिए होना पड़ेगा, आपको इंक्रीमेंटल में होना पड़ेगा, और डिसरप्टिव भी होना पड़ेगा. डिसरप्टिव इनोवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी से. डिसरप्टिव इनोवेशन अब आज ये बहुत ही मतलब हेवीली यूज टर्म है, डिसरप्टिव इनोवेशन. व्हाई इट इज डिसरप्टिव? बिकॉज यू स्टॉप द वे द इंडस्ट्री इज वर्किंग. मतलब अब वो इंडस्ट्री को चेंज कर देता. फिनटेक ने पूरा बैंकिंग सिस्टम को ही चेंज कर दिया. नेटफ्लिक्स ने पूरा मतलब मूवी इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया. फिर इंडिया में मतलब बाहर में आपको एयरएनबी, और इंडिया में वाईओ रूम, ये जो है वो होटल का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया. दैट इज द इंडिया में उसका ही एप्लीकेशन हुआ है. बिकॉज इंडिया में देखा जाए तो मतलब एवरीवन कैनॉट स्टे इन अ 5-star होटल बेसिकली. So that's what happened. It was happened earlier in the US market. Then there is a kind of the replication of that model. हम लोग उसको replicate ही किया, copy ही किया. So everybody cannot afford the big 5-star hotel in all the places, means particularly tourist places. So there has to be kind of the budget hotel. Budget hotel means that when you have a room, you can give it a rent. Basically, you have a spare room. So you convert it into a hotel and give it to some organization. So that's a very innovative model for the people who does not want to who do not want to spend much while they're traveling. जो लोग ज्यादा खर्चा नहीं करता ट्रैवल का टाइम में, उन लोगों के लिए ऑप्शन है. और आज के डेट में 5-star होटल से ये टाइप का ही होटल, मतलब वही हो, दिस काइंड ऑफ द मींस वेरियस ऐप ओरिएंटेड होटल, दे आर रनिंग मच बेटर. And that came ARNB from that option only. That is the organization, they introduced that model. They are basically bankrupt. That's a kind of a classic example of the design thinking. Basically, they went to the bankrupt. They are not able to run. They thought of what to do. Then they went to the customers. They asked that, आप लोग क्या मतलब देखते हो क्या, मतलब देखने. Then a customer said that we want this kind of the room and that. They took they rented basically a camera और पिक्चर लिया वैसा वैसा चीज का, मतलब जो ऐसा होटल का वैसा रूम का लेके आपने वेबसाइट में डाला, और उसका सेल 5 गुना ज्यादा हो गया.
They took a direct interview, direct matlab opinion from the customer, what they're looking for, and they put in the website, and that they started to get the revenue 5 times higher than they are getting. सो ऐसा करके यूएस मार्केट में चेंज हुआ, उसके बाद इंडिया मार्केट में भी वही चेंज हुआ. इंडिया मार्केट आल्सो वेंट टू द बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन. So this is a kind of the thing. Now, if you go for the design thinking, this is emphasize design, ideate, prototype, and test. This is a kind of the steps that we know all. And there could be a last step also, that is called the implementation. Somebody said, but somebody emphasis is very important. Then you need to define the problem. What is the problem? Ideate. You need to get the new ideas. Then you to make prototype, and after the testing. These are the kind of the all the step by step process. So we'll discuss some of the part. Now, divergent and convergent thinking, very important. So design thinking, that divergent and convergent thinking, from one angle, from the one point, you are thinking about various possibilities. This is a very important. You have a one problem. Now you are thinking to solve the problem in many ways. So that is called the divergent. So from one point to the many, means one problem, many solution. And another just opposite is that convergent is that when you actually got many solution, from that which is most feasible and suitable, you have to come to the one. So it's a kind of the divergent and convergent kind of the thinking in the design process, means design thinking. And that is a core fundamental. You cannot be restricted, or you cannot have the multiple kind of the things. You have to come to one kind of the solution, because after all, you have so many ideas, and you need to get the best possible and applicable idea. So there is a convergent and there is a divergent. Both type of thinking is necessary for design thinking. Now the step is that empathy. Empathy, why it is empathy? Why we say empathy? We said human centric. Human centric means that empathetic. You have to be empathetic, otherwise you cannot solve. Very important problem. Very important problem is that many cases we have seen that people they have a greatest of the greatest product, best product they have. They're doing very good marketing. They're doing the product in a big way. Still, they did not understand what the people is asking for, or how the people are behaving. Empathetic way. So that is the one simple example I can give you. So there is to be kind of the means जो खाने का मसाला होता है ना, मतलब पकाने का जो मसला जो था, मसाला वो एक्चुअली तैयार हुआ था, किया था, मतलब नॉर्थ का कोई कंपनी तैयार किया था. उसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है. और जब मतलब वो कंपनी तैयार किया था, उसका जो एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन वो कोई कंपनी, दूसरा कोई कंपनी तैयार किया था जिसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है. सो वो लोग तैयार किया था, जहां पे दिखाता है एक लेडी मतलब खाना पका रहा है, उसका पैर में चप्पल है. द थिंग इज दैट इट वाज लाइक दैट. एंड ये एड पूरा इंडिया में आया. पूरा इंडिया में आया तो देखा है, मतलब जो घर का चप्पल है हम लोग मतलब किचन में कभी भी अलाउ भी कर भी लेते हैं, बट साउथ इंडिया में ये एकदम अलाउ नहीं है. You cannot wear any kind of the slipper inside that kitchen. You cannot. So सारा इंडिया में तो थोड़ा चला तो सेल्स अप हुआ, मगर डाउन में सेल्स मतलब साउथ में पूरा डाउन हो गया. सो ये लोग सोचा कि बहुत हमने अच्छा एड भी बनाया, बहुत पैसा लगाया, और बहुत सब भी चैनल में लगाया, सब स्ट्रेटेजी यूज किया, चैनल ब्लॉकिंग सब जगह किया, मतलब एक ही टाइम में हर चैनल में आएगा, सब कुछ लोगों को दिखना ही पड़ेगा, सब कुछ किया. करने के बाद सारा इंडिया में अप हुआ, साउथ इंडिया में डाउन हुआ. ये कैसे हुआ? देन दे फाउंड आउट दैट साउथ इंडिया में लोगों देखा कि वो लेडी जब खाना पका रहा है तो उसका पैर में चप्पल दिख रहा है, मतलब स्लीपर दिख रहा है, एंड नेवर पीपल नेवर लाइक्ड इट एंड दे रिजेक्टेड द प्रोडक्ट. तो इमीडिएटली उसको मतलब उसको रिव्यू मतलब विथड्रॉ किया करके, फिर उसको रीशूट किया, चप्पल निकाल दिया, तब जाके उसको लगाया, और फिर साउथ इंडिया में वो ऊपर गया. So that is how it is, that it is, if you're not empathetic, you will not even get to know why your sales is coming down. So design thinking is very, very empathetic. You need to understand your customer. You need to understand their pain. It is not pity, sympathy, or empathy. It is a kind of the means empathetic way. Pity, simple definition, pity is that the people might took pity on you and give something. That's a kind of thing. It is not even, it is far away from empathy.
Sympathy is that people will be with you, they will be sorry, but the thing is that they are not with you till that kind of the environment. This is a problem with the sympathy. And empathy is that when you are putting yourself in that shoe, so that is the empathy. When you are the managing director, you need to think how the customers are thinking. Yeah, I think for means last week I was seeing that one ad, means one, I was seeing the one article where the Zomato AMD is giving delivery to his customer in Gurgaon. So that is the thing, he was trying to understand what the customers are actually thinking about Zomato service. So that is what he was actually trying to understand. So the thing is that that is how that you need to understand. If you are also the CEO of the organization, you need to understand how the customers are thinking about your organization, about your product or service. That could be anything, even your brand image, your organization, your product or service, anything. Then that is why I think the Japanese culture is much better towards that, because in Japanese culture is a flat, there is no hierarchy. The CEO also works on the same shop floor with any kind of the worker, and they have to do the same kind of the work, because they do not maintain that kind of the hierarchical system. That is the kind of Japanese management system. So that is why that it's much more empathy that you need to, and compassion is the most important thing after empathy, that you understand that what is the problem, now you put into the action. That is the compassion. So last step, that is the compassion, means that whatever you understood you need to put into the action. That is the compassion, and it is the empathetic way, and you need to be compassionate as well. So then only you can understand the customer problem and make the product simple. Product, you have to make very simple product. The very simplest product example is that गूगल सर्च इंजिन. आपका गूगल सर्च इंजिन जो है, मेरे ख्याल से वो सबसे सिंपल मतलब प्रोडक्ट है, मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ एक मतलब दिस काइंड ऑफ द ब्लैंक इज देयर, आप वहां पे टाइप करो, यू गेट एवरीथिंग. इससे सिंपल क्या हो सकता है? If you want to you want to type something, you want to search something, you type in the Google. So Google is nothing, a kind of a small, means kind of that between the two lines or the between the square box or rectangle box, you need to put your the things that you are looking for. आप जो ढूंढ रहे हो वो वहां पे लिखना है, then you get that. This is the simplest way, and that is why it's very easy to handle, easy to operate, easy to understand, and that is why it is number one. इसी के लिए नंबर वन हो गया, बिकॉज आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका जो कस्टमर है कोई भी हो सकता है. नीड टू डिफाइन योर कस्टमर. आप यदि आपका कस्टमर यदि सब है, तो आपको ऐसे ही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो सब यूज कर सकता है. You cannot expect that your customers should be only PhD fellow, or the should be on the means the highly educated people. So that is how that they made the search engine so simple, so easy to use, that I think that most of the population in the world today are using the Google search engine. It's a very very important part. It has to be fun. Fun means that I said that humor. The people always do not want this kind of the environment. Particularly I have seen in the many organization today also, they have a kind of that, means school kind of the environment. School kind of the environment means you have to come, means on the sharp time, because you cannot be 1 minute late, number one. So when you come after in the office, then you have to do your work. You even cannot have any kind of the means normal kind of the behavior. You cannot be casual at any point of the time. It's a very strict kind of the environment. I have seen also in today's time some of the organization. But the problem is that if you have that kind of the environment, the people will not be creative, innovative. They are scared. वो उसको बोलने के लिए डर लगेगा, क्योंकि पहले ही तो उसका सर के ऊपर कुछ तो है. मतलब द थिंग इज दैट दे कैनॉट एक्चुअली, मतलब सर उठा नहीं सकता. सर उठाने से कुछ तो है. अब नया आइडिया, अब नया आइडिया बोल के अपना नौकरी कन गंवाना चाहता है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. उसका दिमाग में ऐसा ही आता है. कोई नया आइडिया बोलेगा, नया आइडिया तो इम्प्लीमेंट का छोड़ो, निकाल ही ना दे. तो इसके लिए छोड़ो, नया आइडिया आइडिया का छोड़ो, अपना काम तो करते रहो. जनरली ऐसे पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता था. बिकॉज जो लोग आता था पहले, मतलब 10 बजे आओ, 4-5 बजे निकल जाओ, जो है करो, नथिंग. कोई नया चीज लाने का तो सोचो मत, और करने का भी जो है वही मतलब करो. दैट्स अ काइंड ऑफ द गवर्नमेंट जॉब यूज्ड टू बी अर्लियर. अभी के नहीं है, अभी गवर्नमेंट जॉब भी चेंज हो गया. सो दैट इज हाउ द काइंड ऑफ द थिंग इज हैपेंस. सो कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता. सो ऐसे
Yeah, Tohin sir, actually, your internet, I think, connection is lost right now. Yeah, no. That's come. Sometimes it happens. Yeah, yeah, So that okay, okay. it is okay. So the thing is Please. that so that happens that, sir, it is a so kind of the clumsy environment that it happens that no creativity comes. मतलब we say that it's a creativity destroyer. सो ऐसे जगह पे आपका प्रोडक्ट भी ऐसा ही होना चाहिए. आप देखिए आईबीएम इतना बड़े कंपनी है, एमआरआई बनाता था. एमआरआई जो एमआरआई है वो एक टिपिकली मशीन होता है जिसमें आपको बॉडी जाना पड़ेगा फॉर ऑल काइंड ऑफ द दिस थिंग्स एमआरआई स्कैन के लिए. अब छोटे कोई बच्चा नहीं जाना चाहता था. छोटा कोई बच्चा नहीं जाना चाहता था बिकॉज इट लुक्स लाइक ए मशीन दैट दे डोंट नॉट वांट टू गो इनसाइड. मतलब अंदर में उसको जाने का प्रॉब्लम, डर लगता था. तो दैट्स अ काइंड ऑफ फीडबैक दे आर गेटिंग फ्रॉम द मींस कस्टमर्स. तो आईबीएम ने क्या किया, इसका लुक ही चेंज कर दिया. इसके अंदर डिज्नी का ऐसा फोटो लगाया कि पीपल, बच्चे लोग जो है वो लोग सोच रहा है कि नाउ इट्स अ काइंड ऑफ द फन, इट्स अ काइंड ऑफ द फन गोइंग इनसाइड दैट एमआरआई मशीन. So they changed the total concept of the MRI machine and make it a fun kind of the experience for the kids. यही है आपको मतलब the kind of the thing that we say ना, you make it lighter, you make it humorous. So that is how you can do that. You can change the means interface of your product. मतलब किसी भी प्रोडक्ट आप देखो, मतलब डिजाइन थिंकिंग में यूएक्स डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब इंटरफेस जो होता है, मतलब किसी भी चीज का, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, चाहे आपका ऐप डेवलपमेंट हो, और एनी काइंड ऑफ द थिंग, इसका मतलब यूजर इंटरफेस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपका उसके ऊपर आपका कंज्यूमर का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत डिपेंड करता है, हाउ दे बिहेव, हाउ दे रिएक्ट. जैसे मैंने बोला था एयरएनबी का जो हुआ था, मतलब उसका कोई मतलब प्रोडक्ट जो रूम उसका था, मतलब बिक ही नहीं रहा था. दे आर नॉट एबल टू सेल इट टू द पीपल. तो गया कस्टमर को पूछा, से व्हाट इज द प्रॉब्लम, दे सेड इट लुक्स वेरी डल, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट हाउ द रूम्स आर एंड ऑल. तो वो लोग कैमरा हायर करके, उसका इतना हालत खराब हो गया था, कैमरा खरीदने का भी पैसा नहीं था, वो हायर करके ले गए. They means interviewed the people, they understood that, they analyzed that, then got the real pictures, means with high definition kind of thing, put the inside in, put their website and all, then the sales went up, मतलब ऊपर आ गया sales. So it has to be a kind of the thing. आपका जो है very important होना चाहिए. If it is a dull, it looks something मतलब dull or not energetic, people will not be interested for your product. Very important. जो दिखता है थोड़ा बहुत तो बिकता है ये. कस्टमर जर्नी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोगों को मतलब कहीं पे दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर जर्नी. कस्टमर जर्नी क्या होता है, मतलब एक अवेयरनेस लेके एडवोकेसी तक जाता है. अवेयरनेस लेके एडवोकेसी मतलब पहले अवेयरनेस मतलब आपका एक डिमांड होता है, दैट कुड बी योर डिमांड, दैट कुड बी योर लेटेंट डिमांड आल्सो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेटेंट डिमांड, व्हाट इज योर एक्जिस्टिंग डिमांड. बिकॉज आपको क्या चाहिए वो आपको जब पता चलता है, उसका हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाने को बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग. देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट इज दैट आपको पता नहीं है आपको क्या चाहिए, देन यू मेक द प्रोडक्ट. दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे आपको क्या चाहिए, दैट आपको मतलब कस्टमर को क्या चाहिए उसको पता लगाना है प्रॉपरली, देन यू हैव टू मेक अ प्रोडक्ट. दैट इज ऑल अबाउट डिजाइन थिंकिंग. सो कस्टमर को अवेयरनेस प्रोडक्ट के बारे में, फिर कस्टमर उसको इवेल्युएट करता है. पहले तो आपको प्रोडक्ट पता चला ये प्रोडक्ट है, देन इवेल्युएट इट. मतलब मैं एक मतलब मान लीजिए मोबाइल खरीदूंगा, तो कौन सा मोबाइल खरीदूंगा, पहले तो मेरे दिमाग में है मैं इस प्राइस में खरीदूंगा, मान लो 15,000 का प्राइस में खरीदूंगा. तो 15,000 का प्राइस में कौन कौन सा मॉडल अवेलेबल है, कौन कौन सा कंपनी का, इवेल्युएट मैं करता हूँ. इवेल्युएट करके देखता हूँ किसका बैटरी बैकअप हाई है, किसका मेमोरी हाई है, किसका कैमरा अच्छा है, ये सब मेरा क्राइटेरियाज है. करके मैं 4-5 कंपनी से पूछता हूँ, फिर जो जो खरीदा है उसको पूछता हूँ, फिर रिव्यू देखता हूँ. आज के डेट में रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर जाकर मैं अंदर पे जाकर सेल्समैन से पूछता हूँ, भाई ये अच्छा है. सेल्समैन 100 टाइम्स भी बोलेगा हाँ ये अच्छा है, देन वी बाय इट. सो दिस इज द काइंड ऑफ इवैल्यूएशन स्टेज. then use means that we say that experience with the product or the means service. आप उसके साथ एक एक्सपीरियंस करते हो, जब आप लाते हो, लाके उसको एक्सपीरियंस करते हो, मतलब हाउ एक्चुअली इट इज वर्किंग. वो जाके यदि आप सेटिस्फाई होते हो, फिर से आप रिपीट परचेस करते हो, लोगों को बोलते हो भाई वो खरीद सकते हो. दैट इज द वर्ड ऑफ माउथ. So this is a kind of a customer journey. It happens with every kind of the product.
Now, when we are having the customer journey, it's very important. You need to understand what is happening inside the brain of the customer. That we say the customer mind mapping. That is very important. That we need to understand also what the customer is thinking all about. Customer mind mapping is very important. We'll see that it's one of the kind of the tool so that we use in the design thinking process. Then that research methods that we say, the research method is very very important, because in the research method we get to know what is the need of the customers, what actually they are looking. It could be qualitative, it could be quantitative. Qualitative means that there is no mathematical, or there is not of data are there. It's a, where is the qualitative? It could be color, no kind of thing. This is a qualitative. And quantitative, when we do the, we can do the numerical applications, मतलब numerically कर सकते हो, quantitative है ये. This is the kind of the research method that we do that. एक जनरेटिव होता है, एक इवैल्यूएटिव होता है. जनरेटिव रिसर्च मेथड जब हम कुछ कलेक्ट करता है, इवैल्यूएटिव जब उसका इवैल्यूएशन करते हैं, देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा बेटर है, वह इवैल्यूएटिव. देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट एथनोग्राफिक रिसर्च. एथनोग्राफिक क्या है, जो इसका एप्लीकेशन बहुत है, it's a people behavior. इसका behavior about the people, that is we say that ethnographic research, which is very important. आप उसी भी चीज करने जाओ तो आपको एक ethnographic research करना पड़ेगा. There's a kind of the market research. आप कोई भी डेटा लाया, डेटा को आप स्टैटिस्टिकली देख सकते हो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हो डेटा एनालिसिस के हिसाब से. फिर आपको एक और इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज कॉल्ड द यू वी से इंटरव्यू मेथड. वी से also FGD, focused group discussion, very important, or sometimes we say this group discussion also. Now FGD or interview, what is that? It is very important method इसलिए क्योंकि we get very selective people, मतलब 8-10 कोई selective लोग लेते हैं एक particular community में का, फिर उस लोग को एक रूम में बिठाते हैं, जनरली एक आइसोलेटेड रूम में, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए देते हैं, एंड वी रिकॉर्ड इट विदाउट इंटरफेयरिंग. यहाँ पे कोई मॉडरेटर बोलता नहीं है कि आप ये बोलो, आप ये बोलो. द कन्वर्सेशन और द डिस्कशन विल गो ऑन इट्स ओन वे. दे एक्चुअली टॉक अबाउट दैट. अभी कोई एक बोलता है तो उसका पॉइंट लेकर दूसरा भी कोई बोल सकता है. So that is how the people talk about that product or service, and they give their valuable insight. जो आपने insight होता है वो देता है, and that the means वो observer जो है उसको note down करता है. Very important point. That is that called FGD, focus group discussion. That is how we get to understand that what could be the requirement of the product or the service. Very important point and very important thing to do in design thinking. Primary and secondary research, it is also the primary and secondary research. Primary research is that when we actually directly conduct any kind of the survey, do any kind of the research activity, that is called the primary. Secondary research is that in many cases ये जो primary research का data ये किसी जर्नल की, मैगजीन या गवर्नमेंट वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश होता है. सो इफ वी फाइंड दैट डेटा इज रिलायबल, मतलब हमें लगे वो डेटा सही है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको फिर सेम काम करके पैसा और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता. और यदि आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो, सो यू डोंट नीड टू वेस्ट द मनी. आपको पैसा वहां पे मतलब खर्चा करने का जरूरत ही नहीं है. सो वो डेटा लेके आप कर सकते हो, बिकॉज ये स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए अभी गवर्नमेंट का बहुत सारा इनिशिएटिव्स भी हो रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे एजेंसी से मदद से, गवर्नमेंट की एजेंसी भी है जो आप लोगों को बहुत सारा डेटा देता है प्रोडक्ट के बारे में, मार्केटिंग रिलेटेड मतलब रिसर्च के. सो ये सब जो चीज है, ये खास करके आप यदि इफ यू गो फॉर एक्सपोर्ट काइंड ऑफ थिंग, बहुत सारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है, प्राइवेट भी है, सो दे गिव लॉट्स ऑफ द डेटा स्टेटिस्टिक्स. सो ये जो है ये सब सेकेंडरी है, ये लेके आप आपका काम कर सकते हो. एटलीस्ट प्राइमरी स्टेज में जब आपको आपके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उतना फाइनेंस नहीं है, देन यू कैन डू दैट. बिकॉज वही चीज जो चीज किया हुआ है उस चीज दोबारा करके उसके पीछे पैसा और टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है. हाउएवर द डेटा शुड बी रिलायबल, मतलब डेटा मतलब ठीक नहीं हुआ तो उसका ऊपर काम करके तो गलत रिजल्ट ही निकलेगा. तो डेटा सही हुआ तो उसको आप कर सकते हैं, उसको सेकेंडरी रिसर्च बोला जाता है. Now, empathy map is very, very important. Who says what they thinks, what they feel, and what they does. These are the users.
ये यूजर का जो चार पोर्शन है, ये एम्पैथी के लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, वो उसको कैसा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, और वो उसके बाद वो क्या कर रहा है. So this is a very important point. Empathy map is very, very important. Then harvable analysis. Harvable analysis is also very important because harvable analysis में क्या होता है, हम लोग सब कुछ किया, जब इंटरनेट में कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेजोन और कहीं पे, हमें बोलते हैं रेट करो मन से 1 to 5. तो हर एक प्रोडक्ट का, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, 5 कंपनी का, उस प्रोडक्ट का कोई 4 या 3 या 5 कोई भी फीचर्स लेके आपको लोगों को पूछना पड़ेगा हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज गुड और बैड कंपेयर टू योर कंपीटर्स. जब उसको आप रेट करोगे 1 to 5 और उसको आप लगाओगे, मतलब एक एक करके आपको पॉइंट करोगे, दैट इज विसे हार्वे बॉल एनालिसिस. इसमें एक बॉल राउंड किया जाता है, राउंड के हिसाब से, मतलब 5, मतलब मान लीजिए एक राउंड का 5 भाग है और 5 में आपको 2 मिला तो 2 parts of the 5, किसी को 4 मिला तो 4 parts of the 5. सो ऐसा करके आपका जो प्रोडक्ट सर्विस का कोई फीचर आपका कंपटीटर का सर्विस का कोई फीचर से आप कंपेयर कर सकते हो थ्रू हार्वेबल एनालिसिस. वेरी सिंपल मेथड. द रूट कॉज एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई सेड दैट गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम का रूट में जाना चाहिए. सिंपल एग्जांपल, आप बहुत सारी चीज देखें, मतलब बहुत बड़े बड़े पिलर और स्टैचू जहाँ पे पिजियन ड्रॉपिंग होता है. पिजियन ड्रॉपिंग मतलब वो लोग आके वहां पे मतलब ड्रॉप करता है. सो दैट हैपेंस एंड दैट इज व्हाई ये जो मतलब बड़े बड़े पिलर है उसका मतलब रास्ट पड़ जाता है. रास्ट मतलब डिके हो जाता है, रास्ट पड़ जाता है, वो मतलब ज्यादा दिन टिक नहीं पाता. तो इसके लिए गवर्नमेंट उसको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल भी यूज करता है, बट नथिंग हैपेंस. इट हैपेंस एवरी टाइम, वट एवर द केमिकल, और उसका पर लगाओ, यूज करो. तो ऐसा ही हो रहा था. तो यूएस में भी ऐसा हो रहा था एक टावर में. सो गवर्नमेंट ने सोचा कि व्हाई इट इज हैपनिंग, वी आर यूजिंग सो मच केमिकल. अगर केमिकल यूज करने से भी और भी ज्यादा उसको डिके हो रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है, बट विदाउट यूजिंग द केमिकल कुछ नहीं कर पाया. तो एक डिजाइन थिंकिंग प्रोफेशनल को ये दिया, तो ये जो है ये सोचा क्यों ये हो रहा है. देन ही फाउंड आउट दैट यहाँ पे बहुत सारा मकड़िया होता है, इंसेक्ट होता है. ये जो मकड़िया इंसेक्ट होता है, ये लोग शाम में जब निकलते हैं, मकड़िया खाता है, इंसेक्ट वो सब आता है, और वो सब खाने के लिए वो पिजियन भी आ जाता है, मतलब आके उसको खाता है, और उस टाइम में ये ड्रॉपिंग वगैरह हो जाता है. तो उसके लिए उसको क्या करने का, कोई केमिकल नहीं यूज करना पड़ेगा. ये कब होता है, बेसिकली शाम में होता है, मतलब आफ्टर द डे, मतलब इवनिंग के टाइम से ये होता है. सो दे पुट ए बिग लाइट, बहुत बड़ा लाइट लगा दिया. अब बहुत बड़ा लाइट लगा दिया तो वहां पे वो चीज है नहीं, मतलब जो इंसेक्ट वगैरह था, मतलब वो मकोड़ आ रहा था, वो नहीं आ रहा, और उसको खाने के लिए पिजन भी नहीं आ रहा है, पिजन ड्रॉपिंग भी नहीं हो रहा है. सो you need to go to the root cause of every problem, because if you understand the root cause, mainly you actually got the solution and you can do wonders. So that is what we say, that do root cause analysis for the customer or consumer also. Consumer का जो है उसका root cause भी आप analysis करो, then only you can understand. ये जो tools वगैरह होता है, mind mapping, यू एक्चुअली गेट इट, आप नेट में देख लो, बहुत सारा फ्री टूल्स होता है जहाँ पर डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग के हिसाब से. 6 थिंकिंग हैट बहुत ही पॉपुलर है, जहाँ पे रेड व्हाइट ब्लू एक एक हैट होता है, एक एक टाइप का मतलब थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल. सो 6 people विल बी रिस्पॉन्सिबल टू थिंक इन अ डिफरेंट वे. Then there is another method called scamper. There is a analogies, body storming. Body storming is that brainstorming हम लोगों ने सुना, how to think about that sitting in a group. Body storming is that how to act in a certain situation. ये थोड़ा act मतलब body के ऊपर है, so how you act. So ये होता है body storming. Then storyboarding means you give your story and they'll put it in a board, so all the ideas will come. These are the kind of the storyboarding. So ये सब जो है, these are the kind of the thing how you get more ideas. फिर इस आइडिया को बहुत सारा आ गया, फिर इसको फिल्ट्रेट किया जाता है. फिल्ट्रेट करने के बाद देन यू नीड टू मेक ए प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप मीन्स दैट हाउ यू डू दैट, you need to make a prototype and ultimately you have to test the prototype, and that should be done iterative way. Iterative way means that it should be done again and again when till you are not satisfied, till you are not understanding that this is a right match for your customer or the consumer.
So it happens in many ways or many times, iterative process, and that is how you get the best product. And that's what happened in all organization today. Whatever the products are doing extremely well, it is not like that they came out with this product only once, means एक ही टाइम में वो प्रोडक्ट आ गया और हिट हो गया. इसके पीछे बहुत साल का मेहनत रहता है और बहुत रिसर्च रहता है. सो दैट इज ऑल अबाउट योर डिजाइन थिंकिंग. होप आपको फंडामेंटल्स जो है डिजाइन थिंकिंग का समझ में आ चुका होगा. या सर डेफिनेटली. और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टार्टअप के लिए, बिकॉज दे different types of problem in daily life or daily operations in the business. So this is, I think, very helpful to the all the startup who have joined today with us. And so there's a question from one of the startup. It is, what thinking level should have the startup before starting the business or any startup? See, basically thing is that startup thinking level we cannot define. हम लोग यहाँ पे define नहीं कर सकते कौन सा level thinking होगा, because the thing is it's an iterative process. When you need to understand the customer problem, then you need to actually create the product. Then you need to understand whether this product is actually मतलब delivering proper solution or not. Then you need to try it again, iterative process. सो यहाँ पे कोई कहीं पे लीनियर नहीं है, यहाँ पे स्टॉप नहीं है. मतलब आपका लेवल आज मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये नहीं है कि आपका लेवल यहाँ पे होने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए. सो हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं सिंपल वे, आपको मैं बता दिया, दिस इज वन लाइन, ओके. विदाउट विदाउट एक्चुअली रिमूविंग दैट लाइन, हाउ कैन यू मेक दिस स्मॉलर. मतलब इसको रिमूव नहीं करके इसको छोटा कैसे बना सकते हो. मतलब इसके पास में एक बड़ा लाइन आप खींच दो तो ऑटोमेटिकली ये छोटा हो जाएगा. सो आपका थिंकिंग प्रोसेस वैसा ही है. द थिंग इज दैट आप जो आज सोच रहे हो कल वो स्टैंडर्ड अप हो जाएगा. इफ यू आर इन द प्रोसेस इज आइटरेटिव वे, आप समझ में आएगा. इज अ वेरी थिंग, मैं इसको बहुत बार ट्रेनिंग में ले चुका हूँ कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, व्हेन यू स्टार्ट समथिंग, आपका प्रॉब्लम बड़ा दिखता है, आपको छोटा दिखता है. नाउ यू पुट द एफर्ट, दैट इज लर्निंग का. जैसे आपका लर्निंग का बड़ा होता है, 3 महीने में आपका प्रॉब्लम एक ही साइज पे आ जाएगा. व्हेन यू लुक एयर द प्रॉब्लम, यू लुक कंफर्टेबल, अच्छा ये प्रॉब्लम है. फिर 3 महीने के बाद आप प्रॉब्लम से बड़ा हो जाओगे, तब बोलेगे ये तो कुछ भी नहीं है. तो 6 महीने पहले जो था प्रॉब्लम वाज मच बिगर और स्मॉलर. मैं सोच के ये प्रॉब्लम है कैसे करूंगा, 3 महीने में you are in the same level, or 6 months it's much higher. So what is that? You are putting your efforts, that is we say continuous effort. If you're putting 1% effort every day, yearly you will actually improve 37%, more than 37%. मतलब आज मान लीजिए 100 मिनट पर है कुछ चीज, कल 101. ये कंपाउंडिंग अप कीजिए तो वो आफ्टर 1 ईयर यू गेट 37% इम्प्रूवमेंट. और दूसरा ही उल्टा 1% का आप यदि करके कम करें तो आपको एक साल में आप 0 पे आ जाएंगे. So that we say the compounding growth, the fundamentals of the compounding growth, it's a kind of the irritative also. कि आप करोगे 1% करके ही आप ग्रो करो ना, रोज इरिटेटिव ग्रो करोगे तो आपका जो लेवल है वो आप हो जाएगा. देयर इज नो स्टैंडर्ड लेवल. अब थोड़ी पता था स्टीव जॉब्स को वो एप्पल का ये आईपॉड बना लेगा जब वो स्टार्ट किया था. सो यू नेवर. एक स्टीव जॉब का मतलब एग्जांपल है कि स्टीव जॉब्स कैलीग्राफी सीखा था, जब उसको निकाल दिया था पहले कंपनी से, तो नहीं ना, पहले वो जॉब कॉलेज छोड़ दिया था. कॉलेज छोड़ने के बाद टू लर्न हैंड राइटिंग एक्सपर्टीज, ओके, कैलीग्राफी, कैसे हैंड राइटिंग को. तो बोलते हैंड राइटिंग सीख तो मैंने लिया, कहीं पे कोई काम ही नहीं है क्या, वो तो सॉफ्टवेयर का काम करता था. जब मतलब वो एप्पल बनाया, मैकिन्टोश बनाया, मतलब अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 20 years लेटर, 20 साल के बाद, तब वो हमारा वर्ड का जो आता है ना फॉन्ट, वर्ड का फॉन्ट में वो कैलीग्राफी का यूज आया. So that is a very simple kind of thing. There is no such way that we can define this is a level of the standard of thinking. You definitely can raise the standard of thinking if you are doing, if you are continuously working on that. Okay, नहीं, that's very true. I think startups को बाकी सारी चीजों में help मिलेगी अगर design thinking follow करते हैं. Then definitely they will feel the change about thinking and the process. Definitely, So yeah, it's a very constructive way. Constructive way means that you need to understand the customer, their need, their problem, their pain point, and you need to the root cause and solve that way. So it's a very scientific way how you design the total solution for your customer, and that is why you can get the best of the best product. And world is getting Apple,
or any kind of the organization, they're doing best out of this only. So that is the way, that is why the design thinking is so much impactful and everyone is talking about design thinking. Yeah, definitely. And one more thing I just want to ask that suppose startups are facing some difficulties in daily life, they need to take some decisions in their team or something. So how they can take the help of design thinking, or See, they the can thing is, take some, yeah. team management is very important. So the team management is a totally different kind of thing that we talk about. Team management means that, see, for the startup, basically the startup, when you start the organization, that time hardly you get a very good resource to start. Okay, so that time the thing is, because you are not a brand, so that time you need to make a such kind of a culture which will inspire the people to do something innovative, creative, and they can have their freedom to experiment. That is why that you see the Infosys जब नारायण मूर्ति ने start किया था in Bangalore 9th block में, when they had started, they have Infosys, some of their co-women's juniors, basically they started with that. What they did nothing, means they had nothing to do it. So they had a vision to do something great, they had a flexibility to implement their ideas, they did it and they made it. There is a kind of thing, there's a flow towards that software in that time. Obviously, there's a push, Yeah. but the thing, that is how you sense it. If you are a good entrepreneur, you can sense that in which direction the wind is blowing. कौन सा तरफ हवा जा रहा है वो आपको देखना ही पड़ेगा. आपको हवा नहीं देखा तो मतलब हवा के तरफ नहीं जाएगा तो आपको मतलब कंपनी आप प्रोडक्ट हो नहीं होगा. मतलब हवा एक तरफ जा रहा है, आप प्रोडक्ट एक तरफ बनाए हो तो वो तो चलने वाला है नहीं. तो दैट इज हाउ दैट यू इज या वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट. डिफिकल्टीज तो होंगी अगर इस तरीके से होगा तो, बट या दिस फंडामेंटल सेशन फॉर द स्टार्टअप्स वेरी हेल्पफुल, आई थिंक उनको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा एंड दे कैन चेंज द लेवल ऑफ थिंकिंग और समथिंग फॉर देयर स्टार्टअप्स नाउ. So in other sessions we will also know something interesting about the design thinking process. So we will organize more session about the design thinking with you. And definitely, Definitely. it's an Very honor excited. to that you are here with us and you have taken the session. It's a very thoughtful and the informative session from your side. So I hope the all startup will take the benefits of these things. Thank So you. thank Thank you you. so much again. I really appreciate your time you have given to us. So thank you so much for today's session. Thanks a lot. I'm also means very much happy to have a session with you. So it's nice to talking to you and interacting with the startups. Thanks a lot. Thank you so much, sir. Thank you.